You're watching Northeast Express on HornbillTV. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Wednesday said the state may require at least rupees 1,000 crore to repair damaged properties and rehabilitate people affected by the latest wave of floods. Addressing a press conference, Sarma said Prime Minister Narendra Modi has assured the state of full assistance in the rehabilitation process. The Chief Minister said the government launched a rapid relief assessment drive on August 9 to determine the extent of damage and provide permanent relief to affected families. According to the initial assessment, more than 8,000 families have been surveyed so far, with the total damage estimated at around rupees 150 crore, Sarma said. He added that a detailed assessment would help the government plan further rehabilitation and restoration measure in the flood-hit districts. September শেষ কৰিম কাৰণ প্ৰথম একমাহ লাগিব ডাবল চেকিং কৰোতে আমাক 15 দিনতকৈ বেছি নালাগে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াই যেনেকৈ আমি গুণোৎসৱ কৰো তেনেকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়াৰ পৰা সেই জিলাৰ শিক্ষক নহয় আন জিলাৰ পৰা আৰু ইনভেজিলেটৰ বা সাৰ্ভেয়ৰ গৈ 10% এটা ফ্ৰেছ চেকিং কৰিব যে এই যেহেতু সাৰ্ভেটো কৰিলে এই সাৰ্ভেটোত কিবা ভুল আছে নেকি আৰু 10% ফ্ৰেছ চেকিং কৰিব কিন্তু যেটো থাৰ্ড চেকিং হ'ব হি জিলাৰ বিষয়া নহয় হি জিলাৰ বাহিৰৰ বিষয়াই কৰিব অৰ্থাৎ আমি এটা ফুল প্ৰুফ মেকানিজম বনাব খুজিছো যাতে কাৰো উজৰ আপত্তি থাকিব নোৱাৰে আৰু এই সময়ছোৱাত আমাৰ লিষ্টখন আমি তাৰ যেহেতু ব্লকত আমি আৰি দিম গতিকে কোনোবাই পিছত কমপ্লেইন কৰাতকৈ আগতীয়াকৈ যাতে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে যে মোৰ ঘৰলৈকে নহল বা মোৰো ড্যামেজ হৈছিল মোৰ ঘৰলৈকেও আহক আমি এটা ৰাইজৰ অভিযোগ লোৱাৰো এটা ব্যৱস্থা ৰাখিম যাতে কোনোবাই দাবী কৰিলে সেই দাবীৰ আমি নিষ্পত্তিও কৰিব পাৰো আমি আশা কৰিছো যে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰায় 1000 কোটি টকাতকৈ বেছি ৰাজ্য চৰকাৰে ড্যামেজ এছেছমেন্ট ড্যামেজত খৰচ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি এই ধৰণে কাৰণ মই দেখিছো যে 8000 ড্যামেজ এছেছমেন্ট কৰোতে প্ৰায় 200 কোটি টকাৰ ওচৰে ইতিমধ্যে ড্যামেজ ৰিপৰ্ট আহিছে গতিকে 50-60,000 পৰিয়ালৰ ওচৰত যাওঁতে হয়তো এই সংখ্যাটো আৰু বেছি হ'বগৈ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে মোক আশ্বাস দিছে যে যাৰ অৰিজিনেল ক্ষতি হৈছে তাক সহায় কৰাত কোনো বাধা নাই কিন্তু তেখেতেও মোক কৈছে যাতে লিষ্টত ক্ষতি নোহোৱা মানুহৰ নাম নুখুমায় কাৰণ এজন ক্ষতি নোহোৱা মানুহৰ নাম খুমালে আন 10 জনেও নিজৰ নাম খুমাবলৈ চেষ্টা কৰে ফলত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে Security forces and law enforcement agencies in Manipur displayed a large cache of 1,422 arms, 7,010 rounds of ammunition and 1,137 explosives recovered across the state between February 5 and August 11. Speaking at the display in Imphal, the Manipur DGP said 1,570 joint operations were conducted during the period, leading to the arrest of 491 extremists. He said around 1,450 weapons had been recovered since the formation of the present government, including nearly 85% of the arms looted from police armories. The DGP said the security situation had improved significantly with violence and arson incidents declining. He also highlighted the government's surrender policy and urged insurgent groups to lay down their arms and return to the mainstream. On the entire narcotics drive, he said that security agencies destroyed 692 acres of poppy cultivation, registered 158 cases and arrested 223 people. He added that security arrangements also facilitated the movement of around 16,500 loaded trucks carrying essential commodities along the national highway. See, there is a considerable improvement in the situation. In terms of overall incidents of either fire or arsoning or killing, so they have gone down substantially. Our effort is on under the guidance and able leadership of our Chief Minister and the Home Minister. We are striving to bring peace to Manipur.
and we have made substantial progress. We will keep working hard to ensure that peace prevails in Manipur. Sir, according to your assessment, sir, How many weapons have been so far arrested? After this present government formation, about 1450 weapons have been recovered. We have almost recovered 85% of the arms which were taken away from the police armories, and the efforts are on to bring the rest of the weapons back. The Chief Minister Imran Khan have made a statement that to surrender arms in 15 days. So, will you assure people of Manipur that no case will be registered within these 15 days? And message to the CM has already given a statement regarding surrender and surrender of arms and surrender of militants. I hope all the extremist and insurgent outfits come out and surrender as per the appeal of the Honorable Chief Minister. Sir, about the extortion-related element, particularly in highway, how far the situation? Extortion activities have been controlled. Fresh violence was reported from Tokpa Naga village in the Champa area of Kangpokpi district on Tuesday night, with around 10 houses and a church allegedly set ablaze. The perpetrators have not been identified and no official statement on the incident was available from the authorities at the time of filing this report. The Liangmai Naga Council LNC Manipur is in a press release issued and on Wednesday said that the incident occurred at around 9:30 p.m. on August 11, alleging that armed persons entered the village and set fire to around 10 houses and a church. The allegations could not be independently verified. The council strongly condemned the report attack and expressed concern over the alleged targeting of civilian homes and a place of worship. The LNC also claimed that security personnel were stationed only a few meters from the affected area and questioned the alleged failure to prevent or intervene in the attack. It demanded an inquiry into the conduct and possible dereliction of duty of security personnel deployed in the vicinity. The council demanded the immediate arrest and prosecution of those responsible, besides a swift, impartial, transparent and time-bound investigation into the incident. It also called for enhanced security in the affected area and adequate relief, rehabilitation and compensation for families whose homes and properties were allegedly destroyed. The reported incident comes amid continuing tensions in parts of Kangpokpi district, raising fresh concerns over the safety of civilians in vulnerable areas. With the identity of the perpetrators yet to be established and no official account available so far, the circumstances surrounding the alleged arson remains under investigation. The counter-economic blockade and total shutdown along National Highway 202 and NH202 have been lifted following a meeting between the Kuki CSO Working Committee, WCKCSCs and authorities, allowing around 460 goods carrying vehicles to resume their journey towards Ukhrul, according to Manipur Home Minister Govindas Kontojam. Kontojam said the meeting with the WCKCSCs was held at Shankai village in Ukhrul under the directive of Chief Minister Yumnam Kemchan Singh. Following a long and detailed discussion, the WCKCSCs agreed to lift the counter-economic blockade and total shutdown along the NH202
the Home Minister said. Following the lifting of the blockade and shutdown, around 460 goods-carrying vehicles resumed movement towards Ukhrul, bringing relief to transporters, traders and the general public. The Home Minister described the reopening of NH 202 as an important step towards restoring the free movement of people and essential goods and keeping the vital highway corridor open. The development comes amid continued efforts by the state government to restore normal movement along Manipur's highways and ensure the uninterrupted movement of passengers and essential commodities. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Tuesday said that the proposed Taj Gateway Hotel in Jagri Road will help strengthen the ecosystem around the upcoming semiconductor plant. Addressing a press conference after the cabinet meeting, Sarma said the state government is working to develop supporting infrastructure and facilities around the semiconductor projects in Jaggi Road. Meanwhile, Sarma said he regularly visits ongoing government projects, including the Zubin Khetra project and the Science City in Guwahati. He added that the projects are being executed by the Public Works Department (PWD), which he oversees. In Jaggi Road, Government of Assam is developing a ecosystem surrounding the semiconductor plant. So, as a part of our initiative to develop ecosystem, today we have approved lease agreement between government and Indian Hotel Corporation Limited to set up a Taj Gateway in Jaggi Road. So this will essentially help us in promoting ecosystem for semiconductor project. The project is on. I normally visit every site where some projects is going on. So yesterday I visited our Science City and Zubin Khetra. Both are ongoing projects, and these projects are being done by PWD department. And as I am looking after PWD department, so I regularly keep visiting projects which are undergoing. Protests were held at Rajgarh in Gopur along the Assam-Arunachal Pradesh border on Tuesday over the alleged indiscriminate firing by people from Arunachal Pradesh at Mingmang Badati in Assam's Demachi district. The protest was jointly organized by the Tribal Migrants Protection Committee (TMPK) and several local organizations, which condemned the incident and demanded strict action against those responsible. Protesters raised slogans and displayed placards calling for the immediate arrest of the accused and stringent punishment. The incident has also triggered calls for a district-wide ban in Demaji as local organizations and residents stepped up protests over the firing. Protesters expressed concern over the recurrence of such incidents along the Assam-Arunachal Pradesh border and urged the administration to strengthen security arrangements along the interstate boundary. They also called for effective measures to ensure the safety of residents in frontier areas and prevent similar incidents in the future. देख सकते हैं आज एंटायरली हम लोग सदिया से लेके बोरुली तक हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड ब्लॉकेज कर रहे हैं। आप लोगों को शायद मालूम ही होगा 8 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ है मिंगमांग में 9 लोगों को हमारे मिसिंग भाइयों को गोली मारा गया है। अभी लकीली अभी दोनी पोलो का कृपा ही बोलना पड़ेगा, जिसका वजह से कोई सर पे या सीने पे गोली नहीं लगा, पैर में या मतलब बिलो द बेल्ट गोली लगा है। अभी वो लोग हॉस्पिटलाइज है, अभी भी नहीं बोल सकते हैं। कल परसों पता नहीं क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कुछ भी हो सकता है,
नाउ अभी ये चीजों को लेके अभी बॉर्डर इशू ऐसा कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। जहाँ जहाँ पे असम के साथ में अरुणाचल के बॉर्डर है आगे पीछे भी इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इस तरह का कभी फायरिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ है। हमें पहले से लगता है टक्का मिसिंग पॉइंट के बाद पहले से लगता है कि इस देर से बॉर्डर इशू। हम लोग ये सोचते हैं कि तानी ब्रदर्स है, भाई भैया ही है, तो आपस में मिलकर बात मतलब बैठ के बात करना चाहिए। बट ये सारे आज तक जितने सारे से धीरे धीरे करते 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 आज ये सिचुएशन तक आ गया है कि अरुणाचल के लोग हमारे अपने भाइयों को फायरिंग कर रहे हैं। तो हमेशा पहले ऐसा होते आया है कि कुछ भी इशू होगा तो हम लोग बैठ के टेबल पे बात करते हैं। वी आर डन विद दैट थिंग। अभी टेबल पे बात करके बैठ के बात करना होगा ही नहीं, हम लोग सुनेंगे। हाँ, हर बार इस तरह से कोई एक इस तरह का एक एग्जाम्पल सेट हो गया है कि हमें सुनने में भी आ रहा है कि हर बार जब भी असम के मिसिंग भाई को गोली मारा जाता है, दाव से काटा जाता है, मर्डर किया जाता है, कोई इशू नहीं होता। टेबल पे बोला, उन लोगों को बैठो बात करो, फिर उसके बाद में पैसे के बाद निकल के आता है कि उन लोगों को पैसा दे दो ठीक हो जाता है। दिस इज नॉट द थिंग। हमें लगा कि भाई भैया लोगों ने बुलाया बात करें तो हमें एम्बिकेबल सोल्यूशन पे हमेशा आते हैं। नाउ दिस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि हमें टेबल पे बुलाएंगे, बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि चलो इस बार सोल्यूशन करते हैं। नो, दिस इज नॉट द थिंग। हमें जब भी हर बार आप लोग देखते आ रहे हैं, असम में जब भी कुछ इंसिडेंट होता है, अरुणाचल भाइयों का हमें जब कॉल करते हैं, हम लोग ये नहीं पूछते कि वो आदि है, गालो है, नीचे है, आपता नहीं है। नो, अरुणाचल का कोई एक भाई, कोई एक बहन या इंसिडेंट में फंसा हुआ है, हम लोग को जाना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ हम लोग यहाँ से भेजते हैं। बट ये सेम चीज हमारे मिसिंग भाइयों का साथ अरुणाचल में नहीं हो रहा है। अब आज ये न्यूज जब पब्लिश होगा, काइंडली एक बार कमेंट सेक्शन में जाइए। ये 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कोई डेरोगेटरी रिमार्क या कोई ट्राइब को लेके, कोई कम्युनिटी को लेके अभी तक हम लोग कोई एक सेंटेंस नहीं बोल रहे। 2 दिन का फेसबुक पे पोस्ट खोल के देखिए, न्यूज में एक ही रिमार्क, मिसिंग लोग लेबर है, अरुणाचल में आता है, उन लोग का इसी तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई हम लोग का लेबर मरता है तो बोलता है कि हाँ, लेबर लोग का यही डिग्निटी है, मरना चाहिए। दिस इज नॉट द थिंग। हम लोग ये सुनने वाले नहीं है, हजम करने वाले नहीं है। बार बार की जब इंसिडेंट होता है तो हमारे ट्राइब को टारगेट करके बात करते हैं। हम तो आज तक कभी अरुणाचल के कोई ट्राइब को टारगेट करके बात नहीं कर रहे हैं। पब्लिक लोग के खुलेआम वो लोग बंदूक फायरिंग कर रहे हैं। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। और ये अभी कल किसी ने बोल रहा था कि असम के लोग मतलब 15-20 बंदूक लेके, कम ऑन मैन, हमारे असम में किसी के पास लाइसेंस गन है ही नहीं। और अगर कोई 15 बंदूक लेके गए हैं मिंगमंग विलेज में तो काइंडली वीडियो प्रूफ कीजिए। वो लोग हमारे भाई है ही नहीं, वो लोग टेररिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है। काइंडली वीडियो आप लोग न्यूज में पब्लिश है, जैसे लिखने से नहीं होगा कि 15 बंदूक लेके आया था, दिखाइए वो बंदूक। हमारे पास तो प्रूफ है कि आप लोगों ने गोली चलाया, वीडियो भी है, और हमारा अभी पेशेंट अभी हॉस्पिटलाइज होके है। वी हैव द प्रूफ। अगर आपके पास प्रूफ है कि 15 बंदूक लेके आए तो काइंडली दिखाइए। अगर दिखा नहीं सकते तो काइंडली इस तरह का कोई फेक न्यूज हम लोग फैलाना बंद कीजिए। और बहुत हो गया। हम लोग हर बार, हम लोग का दिमाग ये है कि जिन लोगों ने गोली चलाई, अभी तक कोई पब्लिश नहीं हुआ कि किसने गोली चलाई। जिसने भी गोली चलाई है, अरुणाचल के लोग चाहिए, आप लोग मीटिंग कीजिए, बात कीजिए, उसको पकड़ के असम गवर्नमेंट का, असम पुलिस को आप लोग समझा दीजिए। हम लोग का डिमांड रुक जाएगा। असम और अरुणाचल का प्रशासन भी वहाँ में शामिल था, लेकिन उसमें देखा गया कि तो वो लोग का पब्लिक खुलेआम बंदूक चला रहा है, लेकिन प्रशासन रहते हुए भी प्रशासन को क्या वही चीज मैं बता रहा हूँ। जब भी असम में कुछ इंसिडेंट होता है अरुणाचल भाइयों का, कौन सही है कौन गलत है हम लोग वो देखते ही नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारा भाई भैया फंसा हुआ है, हमें जाना चाहिए। और इसके लिए हमें असम से भी कितना सुनने के लिए मिलता है कि मिसिंग लोगों का इतना क्या लगा हुआ है कि हर बार कुछ अरुणाचल का इंसिडेंट सबसे पहले वो लोग पहुंच जाता है, सही गलत देखता ही नहीं, बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन हमारे साथ जब कुछ अरुणाचल में होता है वो चीज हमें वो सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और इस तरह से अगर चलता रहा, हम ये जो बार बार कहते आ रहे हैं कि ब्रदरहुड, आई डोंट थिंक सो इस तरह से कंटिन्यू रहा तो ये ब्रदरहुड भी रहने वाला है। और हम लोग का ब्रदरहुड अगर अरुणाचल के साथ में खत्म हो गया तो असम में कौन है उन लोगों के साथ खड़ा होने वाला। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। अब अभी जैसे कि अब हाँ, एक और चीज है, बार बार एक चीज बताया जा रहा है कि असम में सिर्फ मिसिंग लोग अकेले खड़ा है, मिसिंग लोग अकेले खड़ा है। हम लोग ये चीज को इंस्टिगेट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग के साथ में असम का जितना सारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोई हम लोग के साथ खड़ा है। द ओनली रीजन हम लोग किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को अप्रोच किए हैं कि क्या करते हैं इसके बारे में, कुछ करते हैं। हम लोगों ने बोला नहीं, ये पहले हम लोग इनिशियली करते हैं, हम लोग को डिमांड प्रोसेस करते हैं। अगर नहीं सुनता है हमारा बात, अगर वो जिन लोग क्रिमिनल्स है, जिन लोग गोली चलाए, अगर उन लोग को अरेस्ट नहीं करता है, प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेता है, तब डेफिनेटली इससे भी बड़ा आंदोलन एंटायर असम में लोग शुरू कर देंगे। और इसका एक सही कारण असम गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं होगा। आप लोग का ये बंद कब तक रहेगा? जब तक अरेस्ट नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम लोग खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, यही खड़े रहेंगे। ये बंद। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.